सो आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम कैटालिसिस. So enzyme catalysis is a process. It is actually a process which involve enzymes as catalysts. So we know that number of organizations are taking place in the living systems. That means in the body of the animals and plants. To maintain the life process. Actually, these reactions which are taking place in the living systems, they are cellular reactions. Generally, they are cellular reactions. These reactions are catalyzed by, इनको catalyze करते हैं इन reactions को. These are catalyzed. These reactions are catalyzed by organic compounds. Organic compounds known as enzymes. इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोलते हैं एंजाइम्स, जो इन रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं. So what are these actually enzymes? These enzymes are actually biological catalysts है. These are biological catalysts produced by living cells. In our bodies. So now we can define enzymes. So enzymes may be defined as the biological catalysts produced by living cells which catalyze the biochemical reactions in the living organisms. So दोबारा हम define कर सकते हैं. So enzymes are actually, these are biological catalysts produced by living cells which catalyze the biochemical reactions in living organisms. So these enzymes are actually proteins. ये proteins होते हैं असली, with a molecule, with a molar mass. In a molar mass होता है इन proteins का, that is ranges from 15,000 to 10 lakh gram per mole. इनका molar mass है. So for example, अगर ये enzyme present नहीं होंगे, for example, without the presence of enzyme in the digestive tract, in the digestive tract में अगर enzyme present नहीं होगा, so it would take about 50 years to digest a single meal. आप खुद अंदाजा कर सकते हो. यानी अगर एंजाइम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मौजूद नहीं होगा, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर एंजाइम मौजूद नहीं होगा, which works there as a catalyst, फिर एक सिंगल मील को डाइजेस्ट करने में 50 साल लग जाएंगे. Almost 3,000 enzymes has been identified. 3,000 enzymes आइडेंटिफाई कर दिए गए. In our this have been identified and obtained from, इनमें से कुछ हम obtain करते हैं from living, इनको हम obtain करते हैं crystalline from this living cells. In 1969 में पहला एंजाइम सिंथेसाइज कर दिया गया. यानी फर्स्ट एंजाइम वाज सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी. सो मोस्टली निकालते थे इनको लिविंग सेल्स से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से. अब पहली बार 1969 में पहला एंजाइम सिंथेसाइज कर दिया गया लेबोरेटरी में. सो दीज एंजाइम्स और selective and specific. That means they are reaction specific. A particular enzyme can catalyze a particular reaction, not all the reactions. So let us take now some examples of these enzymes. Enzymes and the reactions जिनको ये catalyze करते हैं, ये enzymes. For example, we'll take conversion of glucose
conversion of glucose into ethanol, यानी कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज को इथेनॉल में। यहां पर जो हम एंजाइम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड जाइमेज। ये जाइमेज है, इट इज प्रेजेंट इन, जो ये जाइमेज प्रेजेंट होता है इट इज प्रेजेंट इन ईस्ट में प्रेजेंट होता है, ईस्ट में। सो लेट अस टेक द एग्जांपल। सो दिस इज C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, सो इसको ये कैटलाइज करेगा, दिस इज जाइमेज, ये एंजाइम है, द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम जाइमेज, सो विल गेट C2H5OH, दिस इज इथेनॉल, ये इथेनॉल है, प्लस यहाँ पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, सो ये कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं इथेनॉल में। This is the enzyme catalytic reaction। यहाँ पर जो enzyme use करते हैं that is enzyme, that is zymase, यहाँ पर zymase। Let us take the example one more, that is hydrolysis of urea into ammonia and carbon dioxide by the enzyme। यहाँ पर जो enzyme use करते हैं that is called urease, वो urease है। This urease is present in soybean। सोयाबीन में ही प्रेजेंट होता है। So we write here this is CH2, C double bond O, sorry, this is NH2, this is NH2, C double bond O, NH2, ये यूरिया है। इसको हम करते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस को कैटलाइज करता है यूरेज। Urease is an enzyme, so we'll get ammonia, NH3 plus CO2. The ammonia gives the carbon dioxide। So let us take one more example। यहाँ पर हमने दो enzymes use कर दिए हैं, zymase और urease कर दिए हमने। Let us take one more example। This is hydrolysis of starch। Hydrolysis of starch। Hydrolysis of starch into maltose by diastase। Diastase है, it's an enzyme, diastase। So we'll take here this is C6H12H10 whole N, this is starch, ये starch है। इसको हाइड्रोलिसिस में करेंगे, दिस इज हाइड्रोलिसिस करेंगे, सो विल गेट maltose C12H22O11, दिस इज maltose sugar। यहाँ पर जो हमने इस एंजाइम यूज किया दैट इज diastase। Let us take one more example of the enzyme catalytic reaction, that is hydrolysis of sugar। Hydrolysis of sugar, sugar means cane sugar, into glucose and fructose। यहाँ पर जो हम इन्वॉल्व करते हैं enzyme that is invertase, yeast में प्रेजेंट होता है invertase। So we get C12H22O11, this is sucrose or sugar, इसको हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर एंजाइम यूज करेंगे that is invertase। So we'll get C6H12O6 plus C6H12O6। So this is glucose, this is fructose, this contains aldehyde group, this contains ketonic group, so that is the reason these are isomers। The isomers are glucose and fructose। So these were some enzyme catalyzed reactions। So we have discussed in this lecture what is enzyme catalysis, what are actually enzymes, and
the reactions which are enzyme catalyzed. Okay.